मैंने स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ क्योंकि आई वांट टू बिकम एन एक्टर। मुझे टैटूज वैसे पसंद है बट जूतों के टैटूज नहीं पसंद। मुझे एहान के जूतों के ऐसे छापे मिलते थे आफ्टर। मेरे दिमाग में ना एक फोबिया बैठ गया था कि स्मोकिंग सीन करना है, स्मोकिंग सीन करना है, कैसे होगा कैसे होगा। आई वाज इन द वॉशरूम, बिजॉय सर का कॉल आया और मैंने लाइक आई लव टू सी हिज नेम ऑन माय स्क्रीन। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today we are in conversation with the cast of Dange. Hi guys, welcome to Bollywood Now. Hello. Hi. सबसे पहले तो कैसे हो? मज़ा आ रहा है? इंटरव्यूज बैक टू बैक, प्रमोशंस। आप एक्चुअली पहले हो। You're the first. आप हमारी आज की बोनी कर रहे हो। First I would like to start how this happened. दंगे कैसे हुआ आप सबके साथ? मतलब कैसे आप तक आया ये मूवी and how you guys were approached for it? I'm sure we have our own stories. Harsh, you want to start? Yeah, Harsh. I woke up with the director's text and then rest is the history. Like I signed the film and now we're sitting here. I think Bejoy sir had seen a promo of one of my films that was supposed to come out. That promo hadn't released it yet. And then he got in touch with me, gave me this whole narration of Dange. And I think I did not think twice at that table only right after the narration. For me, it was I really want to do this film. Also, I think I've been a great fan of his cinema, his world of filmmaking. So to be a part of something like that was in fact something I really look forward to. Right. And Harsh, you? I was in the washroom, बिजॉय सर का कॉल आया और मैंने like I love to see his name on my screen and I picked up. तैश आ चुकी थी और उसके बाद उन्होंने कहा हर्ष there's this thing which I want to do and I want you to hear. Can I tell you right now? मैंने कहा सर आवाज़ एको तो नहीं हो रही है? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो ठीक है। तो उन्होंने फिर वहीं बताया। And I remember I was sitting and yeah, obviously couldn't get up. So I heard the whole thing right there. And there was a technical aspect about the film which we can't right now we can't talk about. But उन्होंने तब मुझे बताया। अब मुझे लगा था कि शूट जब तक नज़दीक आएगा ये सब सर शायद भूल जाएंगे। कुछ नहीं भूले, उन्होंने वैसे ही शूट किया जैसे उन्होंने मुझे बताया। Yes. और he is that kind of a guy. So whatever he told me on that day on the phone is what has happened. Yeah. And it is visually, of course, I couldn't imagine वो director का काम होता। हाँ जी। It's way better, way bigger and better than what he. राइट क्योंकि तैश की बात की आपने और मैं मुझे याद है 3 साल पहले यू गाइज वेंट ऑन इंस्टाग्राम लाइव एंड वहाँ पे विजय सर ने बोला था कि आई विल कास्ट हिम वेरी सून और दिस इज़ माई प्रॉमिस एंड ही केप्ट दैट प्रॉमिस यू नो। तो Bejoy sir was talking to somebody on a live. Yes. And I saw that. और मैं कभी लाइव कभी नहीं किया मैंने, तो मैंने उस पर कमेंट किया। मैंने कहा प्लीज़ सर वुड यू रिपीट हर्षवर्धन राणे। और तो किसी ने उनको पढ़ के बताया कि ये सवाल आया है हर्ष का ही आया है। तो बिजॉय सर ने बोला कि हर्ष स्पॉइल्स द डायरेक्टर एंड आई वुड लव टू एनी डायरेक्टर वुड लव टू वर्क अगेन एंड अगेन। तो मैंने कहा फिर मैंने कमेंट किया, मैंने कहा सर आई विल होल्ड यू ऑन दिस प्रॉमिस एंड सो फाइनली He actually kept it. Yes. और नेक्स्ट लाइव पे हम कमेंट करेंगे। और मैं Noted. और मैं ना लास्ट उस दिन ट्रेलर लॉन्च के दिन से मैं पूछी भी हाउ इज यू नो हर्ष निकिता एंड ही वाज लाइक हर्ष इज समवन ही स्पॉइल्स द डायरेक्टर यू नो। He spoils his co-actors also. He's one of the nicest co-actors that you work with. But if I come to a movie, how difficult it was. You know, बीच में निकिता आपका भी scenes दिखाए where you are smoking. So how that is difficult to portray. That you is know? very difficult. Actually, To be because you honest, don't. Because honest, I'm a non-smoker to a level कि मैंने even try करने के लिए आज तक कभी अपने हाथ में सिगरेट नहीं पकड़ी है। तो इस पूरी फिल्म में जब मैंने ये स्टोरी सुनी भी थी, मेरे दिमाग में ना एक फोबिया बैठ गया था कि स्मोकिंग सीन करना है, कैसे होगा इवन दो देर आर दीज हर्बल सिगरेट्स दैट दे यूज विच आर नॉन टोबैको एंड ऑल, बट जस्ट द थॉट ऑफ हैविंग स्मोक कम आउट ऑफ मी वाज समथिंग आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद एट ऑल। तो उन्होंने शुरू में एक स्क्वीजी बनाया मेरे लिए। ओके, दैट स्क्वीजी वाज समथिंग दैट वाज आई डोंट नो हु केम अप विद द आइडिया, जो एक सिपर की बॉटल में नीचे लगा के दैट यू कैन जस्ट कीप पफिंग ऑन इट। लेकिन वो स्क्वीजी जो था बार बार बुझ जाता था। देयर वाज समबडी, वो उसको आके पंप करना पड़ता था। इट वाज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। Then it reached a point where I had nothing else to do but to hold it in my hand. I was extremely scared, but managed to do it. I think that's why also I've been very excited about it because मुझे लगता है finally मैंने अपने comfort zone से कुछ तो अलग किया है. This is just not me.
There are many fight scenes, you know. I would like to know how much difficult it was, you know, pick a side और मतलब दंगे करने में मजा आया. It's very difficult. Like when you see it on the screen, it's 100 times, 1,000 times more difficult than that. I would tell you, it comes to a point where your head is throbbing with pain, because with a lot of screams, your body is not ready to scream that much in a night. I remember we shot these sequences in a very open space in very gruesome conditions, and whenever we had fight scenes where you saw how many people fight in this film, it would take a toll on your health, literally. Like sometimes with a lot of screaming also, you really need some 20-30 minutes to get back to normal. And then you, in that moment, you're thinking a lot of money is like riding on this particular night. So you, as an actress, I think it's a commendable thing that we do to do it over and over and over again. It's not easy, the amount of strength that goes into any fight scene, and keep replicating it, not just once. That there are so many technical faults sometimes with the focus and everything, and then actor has to give the same kind of performance that he gave in the first take till his 10th, 11th, 15th. And as Harsh said, the technical aspect of the film, it's both like, I think it's the second half is almost like a one shot. No? Oops, you can cut it. Yeah. Yeah, full stop. Stop. Period there. Continue. Harsh, for you. मुझे टैटूज वैसे पसंद है, बट जूतों के टैटूज नहीं पसंद. मुझे एहान के जूतों के ऐसे छापे मिलते थे आफ्टर. तो इट वाज लाइक आई यूज्ड टू नो कि इसका सोल आज कैसा था, क्योंकि ही बिलीव्स इन मेथड एक्टिंग व्हेन इट कम्स टू किकिंग पीपल. And Actually did with a lot of mistakes. but it was very nice because it looked many a times our punches were brushing off each other's faces. And I remember one scene where I think you've seen it in the trailer where I hit him with the bat, and at that point when we saw it on the monitor, it was this like fraction of seconds, and it would have hit his nose and it would have been actual it blood. took my hair, and that's what it's कैमरे पे है कि ये बाल ऐसे वो ऐसे इसने पूरा swing लिया है. Swing. And it, but I think that's the what he said. I totally agree कि उस समय adrenaline rush ऐसा होता है आपके अंदर, और हम जैसे लोग जो स्पेशली अपने आप बाहर से आकर अपनी कोशिश कर रहे हैं एक सीमेंट करने की जगह, हमें जब इस तरह का माहौल मिलता है, बड़ी फिल्म मिलती है, तो ये सब दिमाग में नहीं आता उस समय कि कहाँ जूते छप रहे हैं या कहाँ से बैट निकल गया. उस समय लगता है कि खून भी निकलेगा, नो प्रॉब्लम, लेट्स डू इट. एंड आई सॉ द सेम काइंड ऑफ ज़ील इन बोथ ऑफ देम, एंड दे वर बहुत बड़ा एक शील टेल यू इन अ बेटर वे, बट एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे फायर क्रैकर निकिता पे Landed on my neck, and this was when we were shooting the last दंगे का sequence. That time, because आपने देखा होगा ट्रेलर में भी बहुत firecrackers use किए. So one of the firecracker actually, Bejoy sir also is surprised how out of a crowd of some 1,000, 2,000 people, it comes and lands only on my back. I was very fortunate कि वो back पे land हुआ and कहीं इधर face पे नहीं. But it was a complete third degree burn that I had. This happened at 6 a.m. in the morning because we were doing night shifts, and night shift it was coming to an end. तब last में जाकर ये हुआ, and we were shooting in Vasai. It took me like 2 hours to get to the hospital because I had to come to Bandra and then show myself. But the problem was that we had location stress and stuff. तो मेरे को रात को वापस जाना पड़ा after getting all of the malam patni, everything done. I had to go back in the night to shoot because that was the last day of the location. I mean, this is something. Little feverish also. I was, because they'd given me a tetanus that time. But I remember Bejoy sir calling me and saying that I'm in no position to force you, but see if at all anything can be done. And I think वो एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं, it's for the film, you've got to push yourself. I mean, you know. You actually give the blood and sweat. Blood and sweat, सबने दिया यार. But like you know what can like for all of us, as he said, it really means a lot. Really, we don't think about all these things. We give it our everything. राइट. जब मैं दंगे की बात करती हूँ और आप लोगों की बात करती हूँ, तो कि यू नो जब आप अपने टाइम को अगर याद करते हो, तो कभी आप लोगों की वजह से दंगे हुए या आप लोगों ने करवाए दंगे? नहीं यार, बहुत पीसफुल. एटलीस्ट आई हैव हैड अ वेरी पीसफुल कॉलेज लाइफ. ऐसे दंगे वंगे तो कभी नहीं किए. आई थिंक हर्ष और एहान बताएंगे. होगा कुछ स्टोरी. मैंने स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़, क्योंकि आई वांट टू बिकम एन एक्टर. What about you, Ehan? मैंने ऐसे दंगे तो नहीं किए थे, but when I went out from Kashmir, I realized one thing, that there is so much of fear with people who belong to Kashmir. Like when I went to college,
nobody tried to rag me. And मैं उनको बोल रहा मेरे को क्यों नहीं कर रहे? It's like आप कश्मीर से हो ना. So it always had that different energy to it. But what difference you guys see today versus your generation, college life में? यार ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ऑफ कोर्स टुडे आई मीन जो आजकल की आई मीन वी आर ऑल मिलेनियल्स आई बिलीव एंड आजकल की जो 83 के बाद वाले मिलेनियल है ना. यार मैं तो मिलेनियल हूँ. आई थिंक 85 के बाद वाले 86, 88 के बाद. 85 ना 85 to 95 something like that. चलो इसी पे डिस्कस करते हैं. क्या बताइए? I could be wrong. I could be wrong. I could be wrong. I think 87 और आप? मैं 96. I think we are millennials. 83. I think we are millennials. आप लोग for कमेंट्स sure. में बता दीजिए. So the thing is, today's Gen Z generation जो है Gen Z है ना आजकल की. Yeah, I just feel that like we didn't have so much social media back then. I remember जब हम लोग कॉलेज में थे, हम लोग घर जाके हमें फेसबुक का एक्सेस होता था. Today it's not the same. It's all over your phone. People are a lot more into their phones than they are outwards. So I know for a fact that that difference is definitely there. And बाकी जो होता है with every 5 years your generation does change. So that change is bound to happen. हर्ष और एहान आप? Yeah, as she rightly said, we didn't have access to mobile phones as much and the technology and the gear that these people have. But apart from that, I would just like to say, like, you just need to embrace every year, century, age, and that's how you adapt. Even as The actors. exposure is much more because of having all access to so much technology right now. The exposure is way more. But I also feel जो core एक college वालों की एक वो होती है ना nature, how you are when you're in that age from 19 to 21, 22. That is not going to change because even when you hear your parents' stories, when you see your stories, or when you see today's generation, it's somewhere on the similar lines. Of course, तरीके तौर तरीके बदल जाते हैं. Black आपके Mirror. स्कूल की बात कर दीजिए आप. तब कैसा था और अब कैसा है? मेरे को जो फ़र्क दिखता है वो ये है कि हमारे टाइम पे हम लोग टिकट खरीद के फिल्म देखते थे और अभी लोग ज़्यादातर जो भी करके देखते हैं. और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे जब मैं कहीं घूमने पहाड़ों में घूम रहा होता हूँ या बाइक चला रहा होता हूँ तो नीचे लिखते हैं कि आप पार्ट 2 क्यों नहीं कर रहे, पार्ट 3 क्यों नहीं. तो फ़र्क यही है कि आप लोग टिकट खरीदोगे नहीं तो प्रोड्यूसर को पता ही नहीं चलेगा कि वो फिल्म आपको पसंद आई है. व्हाट डू यू वांट? द प्रोड्यूसर टेलीपैथी थोड़ी करेगा, वो जादूगर थोड़ी है कि उसको आपके दिमाग में क्या चल रहा है. नहीं सर, बट हमें तो बहुत पसंद आई, ये प्रोड्यूसर को नहीं मालूम है. तो यही फ़र्क है कि अभी लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि अगर आप टिकट काउंटर पे नहीं जाएंगे तो प्रोड्यूसर विल नॉट बॉदर and he'll never even imagine and think about making a part 2 of any film. तो जो लोग ये कमेंट लिखते हैं ये उनके लिए है. आप लोगों ने टिकट नहीं खरीदी इसीलिए पार्ट 2 नहीं बना. ये फिल्म आ रही है 1st of March. टिकट खरीद लीजिए. Thank you so much. I just want you all to quickly just tell us about दंगे और क्यों हमें देखना चाहिए दंगे और क्यों पब्लिक को देखना चाहिए दंगे. आई थिंक सबसे पहले तो बहुत टाइम से इतनी रॉ रियल यूथफुल मूवी नहीं आई है. तो दिस इज समथिंग दैट वी ब्रॉट फॉर यू विद द प्लेजर ऑफ वॉचिंग इट इन द सिनेमास. तो जो उसका एक मज़ा है थिएटर में जाके देखने का वो ज़रूर उठाइए बिकॉज दिस इज कमिंग आउट ऑन थिएटर्स ऑन द 1st of March. डू गो वॉच दंगे टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स. मैं तो यही कहूँगा यार, क्योंकि आप लोग मेरे कमेंट्स में मचाते हो तो वो सब अगर आपको लिखना है और तो फिर लिखते रहिए आप. लेकिन मैंने अपना काम कर दिया है, विजॉय सर की फिल्म में मैंने काम कर दिया है. सो यू गाइज नाउ हैव टू डू योर पार्ट. सो आई वॉच इट इन थिएटर्स एंड देन राइट कि दंगे 2 कब बनेगी. आई कैन नॉट फोर्स यू टू गो टू द थिएटर. आपको ट्रेलर कैसा लगा और अगर आप वेट करने वाले हो ऑनलाइन आने का तो फिर मुझे मत बोलना कि पार्ट 2 कब आने वाली है. प्लीज वॉच. मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं आर्टिकुलेट नहीं कर सकता राइट वर्ड्स टू टेल यू आप हमारी फिल्म क्यों देखो. बट अगर आप फिल्म्स लाइक फाइट क्लब, अमेरिकन हिस्ट्री, ऐसी फिल्मों को पसंद करते हो वेयर देयर इज़ वायलेंस, देयर इज़ रोमांस, देयर इज़ bloodshed, देयर इज़ एक्शन. So for the sake of that kind of cinema, come and watch our film. And as you've seen in the trailer, it's getting you confused because there's a political angle, there's a fight between two people, the whole colleges are involved, a lot of events. So just watch it for the curiosity.
Thank you so much, guys. It was lovely chatting with you all. I hope this movie goes super duper hit and blockbuster. आपकी मूवी Thank की you so much. शक्कर आप जाना first. Yes, मैं तो जाऊंगी. I'm waiting for it because कुछ अलग है. ये मजा हमारा है जैसे स्लोगन है फर्स्ट को दंगे फर्स्ट मार्च दंगे दंगे first March. Yes. Thank In you the so much for theatres. joining me. in the theaters. Thank you. Hi, this is Nikita Dutta and you're watching me on Bollywood Now. Hi, this is Ehan Bhat and you're watching me on Bollyywood now. Hi, this is Harsh, and you're watching me on Bollywood Now.